Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on silver. MCX Silver price, it appears that the market is currently experiencing a bearish sentiment. The price has broken a downward trend line indicating a continuation of bearish sentiment. The Rs 93,800 level is acting as a critical support level. A break below Rs 93,800 level, the next support level to watch are Rs 91,929 and Rs 89,796 level in the near term. The Rs 95,500 level is identified as a key resistance point. If the price break above this level, it might indicate a possible trend reversal. The MACD indicator is anticipated to give negative crossover, is suggesting bearish momentum in upcoming trading sessions. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिरे एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है सिल्वर। MCX सिल्वर प्राइस ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार वर्तमान में मंदी की भावना का अनुभव कर रहा है। कीमत ने एक नीचे की ओर ट्रेंडलाइन को तोड़ दिया है जो मंदी की भावना की निरंतरता को दर्शाता है। 93,800 रुपीस का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में कार्य कर रहा है। 93,800 रुपीस से नीचे का ब्रेक देखने के लिए अगला टारगेट 91,929 और 89,796 रुपीस है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुपीस 95,500 लेवल पर है। MACD इंडिकेटर की नेगेटिव क्रॉसओवर देने की संभावना है जो कि बेरिश मोमेंटम के लिए सपोर्टिव है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.